Hi everyone, very good evening to all of you. And today is Tuesday at 4. लेकिन market एक important juncture पे है. So I thought why not to come live on Tuesday at 4 and be with you all. It's always fantastic to see all of you over here. Very good evening to everyone. Chinmay, Narendra, and many of the mentees are here. Ayushi, Amit, Amo, a lot of people. I simply enjoy talking to you all. Vidyut, great to see you also here, and Rajendra, very good afternoon, good evening, everyone. तो चलते हैं यहाँ से मार्केट के बारे में डिस्कस करने के लिए और समझते हैं कि मार्केट यहाँ से लग क्या रहा है, क्या यहाँ पर लो बना है वापस से, क्यों मार्केट्स अभी भी बाय ऑन डिप्स पे है और कैसे मार्केट को यहाँ से देखना चाहिए. इनफैक्ट इफ यू हैव बीन following me, you might have been following me on Twitter. अगर आप मेरा Twitter follow कर रहे हैं तो you might be aware what I tweeted in the morning. I mentioned about buy on dips and target था 18,720 का. जो निफ्टी आज का क्लोज अगर आप देखेंगे तो 18,718 पे हुआ, प्रिसाइज एट द लेवल्स दैट वी वर एक्सपेक्टिंग टुडे पूरा दिन. सो अभी फिलहाल हो क्या रहा है मार्केट में, मैं आपको पहले ओवरऑल मार्केट का कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताता हूँ. फिलहाल अगर आप देखेंगे, सो द मार्केट्स, इफ यू लुकिंग एट इट राइट नाउ, वी गेट अ गैप अप ओपनिंग, मे बी not much of a gap, but still we have that movement happening in the first 15-20 minutes. Rest of the day the market is dead, and then the movement happens in the final 30 minutes. That's how the movement is happening. And if you are trading options, especially if you're buying options, making money in the current context of market is not easy. Positionally, I'm talking even for intraday, because options value are deteriorating like anything. If you are you witnessing that? अगर आप ऑप्शंस बाय कर रहे हैं तो यार मार्केट 40-50 पॉइंट भी चल जाता है, ऑप्शंस मान 20-25 पॉइंट चलता है, वो भी अगर आपने एट द मनी या इन द मनी लिया है. तो अगर आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ले रखा है तो उसमें तो मूवमेंट आता ही नहीं. दैट्स द नेचर ऑफ द करंट मार्केट. And the VIX is very low. If you are looking for making money to generate that passive income by selling options, the problem in selling also is happening is the premium has deteriorated to such an extent that is it worth taking the risk? Because आज नहीं तो कल थोड़ा movement sharp आएगा, and that risk is not worth. लेकिन still in the current market environment, I think it is much more sensible to form an option strategy by selling option and maybe covering it to some extent, and that's the easiest way to make money in the current environment. Because if जैसे आज कुछ हुआ, आज ओपन होने के बाद आपने समझो एक घंटे बाद पोजीशन थे, पूरा दिन कुछ नहीं किया, क्लोजिंग वही हो गई, इंट्राडे में भी ऑप्शन में पैसा नहीं बना बाय करके. लेकिन अगर आपने सेल किया होता ऑप्शंस, इफ यू look at what happened with Bank Nifty and Nifty, you still ended up making something because the value continued to deteriorate. The reason is this last 1 month of movement on the market is absolutely with low volatility, and it's not giving a strong movement. Yes, it is a boring market environment, but किसने बोला ऐसे boring environment में आपको बोर होना है? Boring environment है तो कोई strategy form करके market से फिर भी ट्रेड किया जा सकता है. नाउ देयर आर टू वेज इन विच यू कैन ट्रेड इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट. यू एंटिसिपेट अ मूव. एंटिसिपेट का मतलब है कि ऐसा होगा, ऐसा एंटिसिपेट करके पहले ही पोजीशंस क्रिएट करो, तो मॉर्निंग के 15 मिनट्स में मूवमेंट आएगा और आपने पैसा बना लिया और निकल जाओ. दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट. एंटिसिपेशन, द प्रॉब्लम विथ एंटिसिपेशन इज दैट you might not be always right. So the risk is also high because you are taking a position in anticipation of a breakout. If you wait for a breakout, market goes there and reverses down. ऐसा हो रहा है फिलहाल, मतलब यार ब्रेकआउट आता है और वहीं जाके रिवर्स होके नीचे आ जाता है. So the problem is not with you. The problem is with the type of the market right now is such that there is no momentum. The momentum is slowing down. We are seeing some kind of RSI divergence. And the problem is the 55-day cycle is now in the latter half. 55 days टाइम के बारे में अभी मैं आपके साथ में बात करूंगा. तो टाइम के बेसिस पे हमें ये भी पता चलता है कि मार्केट में मोमेंटम कम हो सकता है या कम हो रहा है.
There is one time indicator which I exhaustively use and also talk to everyone is KST indicator. If you look at the KST indicator on the daily time frame chart, usually it's a very big time frame. So it's developed over the period of time. You can't really make a short-term trading decision there. But if you look at the KST daily time frame, that value has been deteriorating for quite some time. And Nifty is behaving precisely as per that. So KST indicator hai kya cheez? You know rate of change. Guys, I want you to interact with me. I want to know, and people who are there on YouTube, ensure you can join me on the Zoom platform. I'm simply sharing the link across with you all. Are you able to see me clearly here? They to Zoom pe aaiye, interaction hoga thoda better because I can see all the chat on the Zoom. It becomes easier for me also. Okay, and subscribe to the channel YouTube, don't forget. So KST indicator is a summation of rate of change indicator. So there are multiple rate of change. Rate of change is a simple momentum oscillator, you can say. And we take different parameters for rate of change. We sum it up and we form an indicator, which is KST, which is developed by Martin Pring, not by me. And it's a superb indicator if you know how to apply it correctly. Now, I'll share the chart with you. As we entered into the 55 days, second half of the 55 days time cycle, we are now seeing some kind of a slower momentum. And that's very obvious. That's the second phase of the 55-day cycle. We also have a time cycle of 85 week, which is around 24th of June. And which is a weekly cycle. But weekly cycle, bahut bada hota hai. I will not get into that discussion. And we have short-term cycles of 15 minutes, which give us a short-term momentum kahan par banega. Remember, on prices at any given point of time, there are there are multiple cycles that act. You need to identify your dominant cycle. You need to identify a cycle which is influencing the trend. And you need to identify the short-term cycle which is helping you to trade. So I'll show across these 2-3 different time cycles for you to understand the context and what does it mean very clearly. And let me very quickly now share across my screen. Let me first go back to the short-term cycle of Bank Nifty जो हमने Saturday के webinar में निकाला था. And then I'll also show about Nifty का time cycle. I want to ask, how many of you or who were there in that Saturday webinar, which was on 10th of June morning? We did. Okay, I can see Sunny was there, Chinmay was there. Fantastic, Wrinkle, Yashasvi, Sandeep. Oh, Sandeep was not there. Narendra Mulani was there, Paras, everyone. So there were many of Anil and everyone was there. So many people were there on Saturday in the morning when we discussed about this time cycle. Nand Kishore, Aruna, great to see all of you over here as well. तो ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये आप लोगों के सामने साथ में हमने फोरकास्ट किया था. क्या फोरकास्ट किया था? यार बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है फिलहाल यहाँ से एक लेग नीचे आएगा एंड वहां पर 12th जून 2:15 टाइम के आसपास प्लस पॉजिटिव आवरली कैंडल बनेगा. वहां पर बैंक निफ्टी पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. Sharad, I have responded to the traders forum, I think 2-3 days back. I'll recheck and I'll respond there definitely. Don't worry about it. So ये था बैंक निफ्टी का टाइम साइकिल. Are you seeing this time cycle? Were you there when we discussed this chart? Now let's go on the latest chart of Bank Nifty and see what happened. It worked like magic. So let me just go on the Bank Nifty chart over here. Chrome पे मैंने ओपन कर रखा है मेरा चार्ट. ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट. If you see this, Bank Nifty moved bang on that way. Can you see that chart? I'll again go back to the original chart. What is the expectation? The expectation was that यहाँ पर एक pullback आएगा शायद ऊपर, फिर नीचे जाएगा around 43,900. Bank Nifty will form a low, reverse back on the upside from the time 12th June 2:15 p.m. And let us see the movement. And ये मैंने नहीं किया दोस्तों, ये आप लोगों ने witness किया है. Power of time. It's not me. Each one of you were there despite of whatever it might be unbelievable.
यहां पर हमने फोरकास्ट किया था इट विल गो अप, वेंट अप, then it will come down 43,900, came down, and then it will reverse on the upside. Can you see the power of time over here? And this was 12th June. जो time लिखा था 2:15 p.m. And you people did it. So I'm telling you, it's something everyone can do. It's not me. It's you all together did this movement of did this together. हमने साथ में किया था. So it will be wrong on my part कि मैंने किया. नहीं दोस्तों, ये सब आप लोगों ने किया साथ में. अभी देखते हैं निफ्टी पे क्या हुआ, निफ्टी पे क्या एक्सपेक्टेशन थी और कैसे मूवमेंट हुआ, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. सो टाइम साइकिल पता करना एक चीज है, टाइम को ट्रेड कैसे करना है वो भी समझने आना चाहिए. सो ओवर हियर व्हाट शुड बी दी ट्रेड सेटअप. दिस इज फॉर इंट्राडे टाइम फ्रेम trading that I am talking about, not positionally. You can do it for positionally also. You can sell options also. So हमने ये भी बात की थी यार, यहाँ पर नीचे you can sell across 43,800 का put options, so you will be able to ride the trend. Now in this scenario, if you check, you clearly got an up move, you got a dip again today, and now it's on the buy side right now. So the Bank Nifty is on the buy side with the time support of 43,900. तो जब तक ये लो इंटैक्ट है, बैंक निफ्टी फिलहाल बाय में. सो देयर आर मल्टीपल स्ट्रेटजीज नाउ यू कैन बिल्ड अराउंड दिस चार्ट. सो अगेन आई विल टेल यू, दिस इज 12th June and 12:45, right? We discussed that time. Let me just recheck the time here जो आप देख रहे हैं. This is 2:15. I'm so sorry. 12:45 निफ्टी का टाइम था. This is 2:15. जो हमने प्लॉट कर रखा था और मेंशन किया था 2:15 p.m. So by looking at this Bank Nifty chart, can I ask you a simple question? What is next आएंगे ना? Can I ask you a simple question? ऐसा देख के Bank Nifty chart moving precisely on 89 period cycle. Now this is 89 period time cycle, turned up at 2:15 p.m. How is that possible? सोचने में दिमाग में क्वेश्चन आता है आप लोगों के दिमाग में? Okay, so many of you are thinking about it. कैसे ऐसे होता है? लेकिन होता है दोस्तों. And this is how it happens, this is how it functions, and this is how it works. That's the power of time. So what we have to understand is, in this kind of a scenario, when you are looking at it, you will be able to trade well. Now let's go to Nifty chart. First, let's see what we were expecting on a Nifty chart, and then we will see how Nifty behaved. So I'm trying to show you how you have to look at time and how you have to trade time. Now, if I come around here, on the Nifty chart, this is the Nifty chart that we discussed in this webinar on Saturday, with 18,550 as the support, which is an important support on the downside. And Tuesday, 12:45, 13 June, we should start turning on the upside. Now let us go on the latest chart, 12:45 या around 1:15 p.m. ये जो रेड लाइन है ये 12:45 है, ये ब्लू लाइन है around 1:15, 1:30 की लाइन है. क्लियर है? Now if I go on the current chart and see what happened, Nifty continued to take support. So I'm going to go on Nifty. And if you look at Nifty, you can see that this is the time, which is around 1:15. So 12:45 to 1:15 के आसपास का जो जोन था, मैंने एक ही साइकिल रखा आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए. And we got a dip around this area, and now we are taking out the high. Can you see that? Nifty का मूवमेंट नीचे नहीं होके sideways हो गया. Okay, until this point. So now the time is right. If you check my tweet, I mentioned that the time is right now
and we should start moving higher from tomorrow morning. Now the problem is you need to anticipate a breakout here and take a position. If you anticipate, you have a higher risk. So what I usually do in this kind of instance, क्योंकि ये movement, ये जो dip आया, ये मैं expect कर रहा था पूरे दिन में एक dip आना चाहिए. We got the dip, and now prices are reversed from the time. See, this is around 115 के आसपास, 1245 to 115, 130. थोड़ा सा late बना, लेकिन still this cycle is active, and because it is taking out the swing high, we reverse back on the upside. Now is the time to anticipate and take positions. How do we take that positions? And yes, Sandeep is saying yes, मैंने post किया था. You need to possibly sell put options in these kind of instances, because जो move था वो सुबह आ गया और पूरे दिन कुछ नहीं किया, time pass किया. If this move would have happened, so something like this is a brilliant move. अगर आप ये chart देख रहे हैं इस level पे, इस जगह पे, this is a brilliant move. The reason being, we formed a low exactly there. We waited. We got a green 3 candle confirmation. Guys, are you there with me? 3 candle confirmations हमने किया था on Saturday. याद है आपको? 3 candle confirmations that we did. Saurabh Gautam is saying that, sir, I booked 45,000 today by positionally shorting puts of 43,600 जो कल short किया था in close in the morning. Fantastic, Saurabh. Bank Nifty पे. Glad that you made money because of that. Sunny is saying, I attended your first session on Saturday, knocking my head on the wall that how can I miss such an important webinar previously. So इसलिए तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जो हम सैटरडे को करते हैं ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है अगर आपने सही एप्लीकेशन समझा उसके बाद. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मूव आया. So that is how you have to look at that. Now that we have looked at the time of Nifty, Bank Nifty, अभी फिलहाल मैं short term में नहीं जा रहा हूँ because my aim is to look at the daily time frame cycle. Similar concept we will apply on the daily time frame chart, and we will apply the indicator that I have been mentioning about as KST. KST indicator is a time indicator, as I keep saying. This indicator is not representing a sell signal. It represents a slower momentum. People look at it like a signal. No, you need to look at a signal on the price, not on the momentum indicator. So यहाँ पर आपको momentum पता चलता है कि यार momentum कम हो रहा है. दिख रहा है आपको? Are you with me? Can you see the momentum started building up here on the upside right from the lows? Now the momentum is reducing. That's the reason I turned super bullish around these levels, and now I am getting little cautious. The reason being, if you look at the market right now, if you look at the channel, we are possibly forming a overall wedge kind of a pattern, which is a slower momentum. Can you see that over here? A slower momentum wedge pattern is being formed. Bearish नहीं है दोस्तों, ये bullish market है. टॉप नहीं पकड़ना है हमें. एंड एक और चीज मैंने कही थी सैटरडे के वेबिनार में, द फॉल लास्ट, इनफैक्ट मेरा एनएसएम का सेशन भी था इन दैट ऑन दैट डे, एंड इट वाज फैंटास्टिक. देयर वर अमेजिंग रिस्पांस दैट द फॉल डजंट लास्ट फॉर मोर देन 2 to 3 days. सेम थिंग हैपेंड हियर एंड इट रिवर्स बैक ऑन द अपसाइड. सो नाउ द की हियर इज टू ensure to anticipate a move and make positions earlier because momentum will be lesser. समझ में आ रहा है? Right now, the reason being, this is the red line. You ignore all the other time cycles, but remember the red line. The red lines are the 55 days time cycle. So time cycle होता क्या? बहुत सारे जन मुझे पूछते हैं, सर टाइम साइकिल आप बात करते हो लेकिन है क्या चीज, ये किस बला का नाम है? तो देखिए, आपने प्राइस देखा है, राइट? यू हैव ऑब्जर्व्ड trend, yeah, trend line, and you say prices bounce back from the trend line, upward sloping trend line. Do you apply trend lines? Are you here, people who are trading, who are looking at charts? Do you apply trend lines? Do you say that we connect the 2 points and we say that prices bounce back from that level? बोलते हैं ना आप लोग? Okay. Similarly, along with trend line, there are channels.
you can draw. Channels means prices move within the channel. You can see this red trend line and then accordingly a red channel. As there are trend lines and channels, there are also time reversal zones and areas. If you look at this red 55 days time cycle, it has worked amazing. Okay. When I say amazing, does not mean exactly same day hoga, zaruri nahi hai, but it has worked on most of the occasions. If you look at this low here, bounce back, यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो गया ये जोन के बाहर, which is little rare. Bounce back, यहां से भी देखिए ना, bounce back, and यहाँ से भी bounce back. So this is a 55 days of time cycle that I am drawing over here with all of you. So Nifty 55 days of time cycle is usually on the buy side in the first half. Momentum reduces in the second half. Is it necessary? No. That is usually the probability. So right now, are we in the, we are in which phase of the market? We are in which phase do you think of this 55 days time cycle? Okay, the later phase. We are in the second phase. Is it clear? Every one of you, we are in the second phase of this time cycle. Since we are in the second phase, the momentum is usually going to reduce. Can you see the reduction in momentum? Yes. Let us just measure how many days have passed the red one. So ignore the other ones. You just focus on the red one. तो आपको focus कहाँ करना है? आपको focus कहाँ करना है? Focus red cycle पे करना है. ये आजू बाजू की जो दो साइकिल है वो क्या है वो अभी मैं डिस्कशन में नहीं जा रहा. So I'm just trying to, and this webinar I'm only trying to tell you what I'm seeing on the chart. I can be wrong, huh? So don't just take my words for it. You need to learn the technique completely and then you decide for yourself. यहाँ से अगर मैंने measure किया from this point until here, we have now completed 38 days of time. We have completed the 38 days of time, which means that we now have approximately 17 days left for the cycle to kick in, which means we will start seeing a pressure on prices post maybe another 3, 4, 5 days of time. Maybe it's just a judgment that I'm making right now. So we will start seeing some kind of a reversal. We will start seeing some kind of a pressure on the prices post 3, 4, 5 days of time. Since we are in the later stage, which is in sync, which is exactly in sync also with my wave count. Wave pattern, wave count, जो हमने देखा है, it is perfectly in sync with that also. And that is the reason how you club your wave theory with time cycle and you come out with an outcome. अभी Gann level जो हम देखेंगे, Gann level था 18,293. Next level था 18,838. एक level था 17,756. तो 18,838 कहां पर है? वो इधर है. एंड हम ऑलरेडी उस लेवल के काफी पास में आके रिवर्स हो रहे. तो मतलब वो लेवल को क्रॉस करना मुश्किल होगा. दैट लेवल विल एक्ट एज अ मैग्नेट. मैग्नेट का क्या मतलब होता है? प्राइसेस विल गो अप बिलो, सो इट विल एक्ट एज अ मीन रिवर्ट लेवल. सो नाउ व्हाट यू कैन स्टार्ट डूइंग इज क्रिएट योर पोजीशंस around that mean revert in option strategies. Now, how do you create that position in option strategies? Let me ask you. Why it should be only me who is talking? Why you can't really help me? So 18,838. Do you know this level X coordinates में डालता हूं 18,838. Okay, so Sarda is saying buyer pull spread or sell calls. Nahi, that is not the correct strategy. Sell OTM calls near magnet level? No, nahi. Sell strangles, Suresh is saying.
Yes, I'm not bearish. See, समझो दोनों चीजों में डिफरेंस समझो. शॉर्ट ट्रायंगल परफेक्ट आयुषी. आई एम ग्लैड दैट मेंटरशिप करने के बाद आपने रॉन्ग आंसर नहीं दिया. So Ayushi is a mentee, so that's why. So over here, what I am trying to tell you is that कि व्यू बुलिश है दोस्तों. यहाँ पर पॉज हो सकता है. When you talk about pausing action, you don't buy puts, right? पॉज है, पॉज में बाय पुट किया तो यार लॉस होगा. व्यू बुलिश है. आज का कैंडल प्रीवियस हाई के ऊपर वापस बंद हो चुका है. सो व्यू बुलिश है, पॉज होगा, मैच्योर्ड अप ट्रेंड है, रिवर्सल नहीं है. करना क्या है? कॉल और पुट दोनों राइट कर सकते. शॉर्ट ट्रायंगल्स फैंटास्टिक. सौरभ गौतम जिन्होंने 45,000 बनाया, he said that on shorting basis of the time. So are you seeing the power of time? I'm asking you. मतलब एटलीस्ट हमें ये व्यू अगर मिल गया कि यार नेक्स्ट 4 दिन में रिवर्सल शायद हो सकता है, शायद आई एम स्टिल बुलिश. मोमेंटम कम होगा मार्केट में, 18,838 के ऊपर नीचे मूव होगा मार्केट, मे बी 18,900 जाके फिर से फिसलेगा नीचे. नाउ आई कैन फॉर्म माय ऑप्शन स्ट्रेटजीज. सो नाउ ऑप्शंस विल प्ले अ वाइटल रोल फॉर मेकिंग अ ट्रेडिंग डिसीजन. नाउ आई कैन से दैट यार ये जो मार्केट बोरियत है ना, ये शायद 3 से 4 दिन की और है, उसके बाद मार्केट में मजा आएगा ट्रेड करने में. दिस इज व्हाट time is all about. Is it interesting, guys? Are you able to find it interesting why time is such a phenomena which can help you to trade, which is very interesting, and which can, if you know how to apply yourself, and you can do that not only in Nifty. You can apply this concept on Bank Nifty, apply it on stocks, apply it on commodities. You can apply this on 15-minute chart, 5-minute chart. You can apply it on anything and everything. Okay. And that's how you can do that. So I'm going to now ask you, are you finding this concept interesting of time cycle that we are doing right now? और बहुत ही सिंपल है. इसे बहुत इजी, एक बार टाइम पता चला तो वो टाइम चेंज नहीं होता है. सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट. सो दिस इज व्हाट आई थॉट आई शुड शेयर इट अक्रॉस विथ यू ऑल कि यार ये मार्केट बोरिंग है. ये बोरिंग मार्केट के बाद ही एक्साइटिंग मार्केट शुरू होगा, तो आप बोर मत होइए. एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई विल कीप डूइंग टॉकिंग अबाउट टाइम एंड अदर थिंग्स, एंड इट वर्क्स सुपर. सो केएसटी इंडिकेटर देखो ना, यहाँ पर टॉप आउट हुआ था, स्लोअर मोमेंटम यहाँ हो रहा है, तो मोमेंटम कम है. सो केएसटी इंडिकेटर इज अ सुपर टाइम इंडिकेटर, लेकिन आपको सही तरीके से अप्लाई करना आना चाहिए. जो ये इंडिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ केएसटी, इट्स अ टाइम इंडिकेटर विच यू नीड टू नो हाउ टू अप्लाई इट करेक्टली. यू कैन, इफ यू अप्लाई इट रॉन्गली, यू विल लूज मनी. सो ये 55 पीरियड कैसे आता है? सो लॉट ऑफ टाइम्स आई गेट अ क्वेश्चन, हाउ डू यू कम अक्रॉस दैट 55 पीरियड? मतलब आपको कैसे पता 54 या 55 यूज करना? The period that we get is usually derived by the concept of Hurst time cycle. So जो ये JM Hurst जो concept है, JM Hurst का, I was just checking something. JM Hurst का जो cycle concept है, उसमें से ये period derive किया. और ये कब derive किया? मैंने ये आज नहीं किया. I've been using for a decade. एक मतलब more than 10 years हो गया जब से मैं ये time cycles का concept use कर रहा हूँ. और एक बार अप्लाई करने के बाद इसे चेंज बहुत रेयरली किया है मैंने. एक ही बार किया है जहां मैंने 54 पीरियड में यूज करता था 2014-15 के आसपास, मैंने उसे 55 किया, बस उतना चेंज किया और कुछ भी आज तक चेंज नहीं किया. तो मतलब बेस्ट पार्ट अबाउट टाइम इज व्हाट, एक बार अप्लाई कर दिया, चार्ट पे डाल के रख दिया, सेव कर दिया, दैट इज देयर फॉर लाइफ टाइम. नाउ यू डोंट रियली हैव टू डू एनीथिंग अबाउट इट. You just need to know how to trade this correctly. So I'm asking you all, do you want to know how to trade this concept of time? जो मैं आपको बता रहा हूँ, how to look at this concept of time in a step-by-step fashion, how to apply this concept of time correctly, and how to look at this 55 days, how to derive this 15 minutes का time cycle, and किस तरीके से करना है. So before we move on, before we close down, just a very quick announcement. We have Master of Cycles
training which is happening on 24th and 25th of June. It's from morning 10 a.m. till 4 p.m. It's a 2 days live program. इसके पहले एक प्री सेशन वीडियोस आपको दिया जाएगा, where we will be looking at these, how to plot a time cycle, and then I'll explain about this concept of Hurst time cycle, how to derive target using time को यूज करके टारगेट भी डिराइव किया जा सकता है, and how you derive time period for your own stocks that you want to trade. या आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक्स है जो आपको ट्रेड करना है, या आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू लिस्ट ऑफ अराउंड 10-15 स्टॉक्स इंडेक्स कि उसमें टाइम साइकिल क्या है. यू आर रेडी रेकनर जो आप यूज कर सकते हो, डायरेक्टली प्लॉट साथ में करेंगे आपके ट्रेडिंग व्यू पे, एंड उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे. उसके बाद में आफ्टर 24-25 जून देयर विल बी अ फॉलो अप सेशन कि आपने ये सही अप्लाई किया है, नहीं किया है, क्या आपको डिफिकल्टी आ रही. एंड इसके साथ में जब आप मेरा ट्वीट रिफर करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ टाइम इन ट्रू सेंस. समय बड़ा बलवान है दोस्तों, समय के साथ ट्रेड करना है, और अगर समय से चूक गए तो पैसा बनाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है. और एक और चीज, ये 100% श्योर शॉट वाला मामला नहीं है. मार्केट ट्रेड करना है तो यू नीड टू टेक दैट रिस्क, यू नीड टू एक्सेप्ट द लॉसेस एंड यू नीड टू मूव ऑन. एंड जब ट्रेंड अच्छा मिलेगा तो पैसा अच्छा बनेगा. दैट्स हाउ यू हैव टू लुक एट इट. सो कैसे रजिस्टर करना है? डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस? आई एम टेकिंग अ वेरी क्विक पोल. If you want to be a part of this wonderful journey on Master of Cycles, which is happening on 24th and 25th of June, this is the poll in front of you. You can register today. देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक लिंक शेयर कर रहा हूं मैं. आप आज के लिए अगर रजिस्टर कर रहे हो तो this offer is no longer valid. But since you people are attending this webinar and giving your time to me, and I see that इतने सारे questions, I am really glad that I am able to put this concept across. I want you people to learn this. So that's why for you all, we will keep that early bird pricing valid for today for all who are attending and seeing this video right now, for all of them. So you can simply use the link and you can go and register yourself. कहाँ पर register करना है? You can simply go and register on this page. Okay guys, I'm open for questions. If you have any questions, then you can please ask me. I'm open for questions. Do that. तो आज के लिए ही ये valid है pricing, as I'm saying, because then we will have the early bird is already over. And आज अगर आप कर रहे हैं तो I will also ensure you get 5 bonus videos along with this. We will be doing KST, Ichimoku cloud and time cycle for the very first time. And don't worry, ये 2 दिन बहुत है. टाइम एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम का, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट. इसे सही एप्लीकेशन करना इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, द प्राइसिंग एज आई सेड इज 22,000 plus taxes. You can simply go on the link and you can register yourself. I'm sharing across the link with you all anyways, and you can do that, take that step forward. How to plot time cycle? Exactly, that's what I'm saying. How to apply KST on time frames, how to trade that. So Bharat, HR, for all of those things, thoda time चाहिए. मतलब I can't really do that in 30 minutes or 2 hours. I need at least 10 hours with you all. So अगर आप 24-25 नहीं भी attend कर पाए, do not worry. We will be giving you the recordings, so you will have the recordings. You can go through at it any which ways at your own pace later on also, and you can apply this concept. और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपने जो सीखा है, जो चीज आप कर चुके उसे छोड़ना है, नहीं. जो आपने सीखा है उसमें जो मिसिंग एलिमेंट है, सी ये स्टडी मैंने कैसे आइडेंटिफाई की. व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग टेक्निकल एनालिसिस, डाउ थियरी एंड एलियट वेव, आई फाउंड यार सब कुछ सही है, लेकिन जब मैं थोड़ा सा टाइम ऑफ हो जाता है ना, तब चैलेंज आ रहा है यार. अगर मुझे पता होता कि आज बाइंग डे है तो मजा ही कुछ और होता, या मुझे पता है यार सेकेंड हाफ में आज बाइंग आने वाली है, तो पैसा बनाना इजी हो जाता है. मतलब आपका व्यू कन्विक्शन ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है जो आप अप्लाई कर रहे हो. एंड दैट्स द रीजन, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड बिल्डिंग अप ऑन टाइम एंड स्टार्टेड अप्लाइंग दिस. एंड देयर आर, आई एम टेलिंग यू, वेरी फ्यू पीपल इन
Eurozone or Asia Pac are actually using this concept of time cycle, and it's not complicated. It's an easy concept. Sahi application aana chahiye, is that what I'm telling over here. Kumar Krishan, new trade setup for all the past mentees and how to apply KST time cycle separately, it would be help. I know we did KST and time separately. दोनों को club कैसे करना है? Sure, Kumar, do not worry about it. See, for mentees, I am there for you all. Don't worry, एक session करेंगे Kumar very soon, where we will discuss this concept for all the mentees. All the mentees, I will do that, and then I'll be able to apply that clearly. I'm not applying it on the stock right now. So Poonam, I will not be able to apply it. I want you to start applying yourself. आप खुद कर सकते हो. मेरी जरूरत ही नहीं है आपको. Okay, there is another question. Raja Singh, sure, you can register for the MOC program, no problem at all, and that is no problem. So I'll inform my team. You can take that step forward and you can register for the MOC program. You can simply do that. Ishwar Kalal, I have a capital of 50,000. Can I trade? That's a tough question. See, agar aapka capital 50,000 ka hai, can I trade? Yes. You can still trade in cash stocks, or you can trade in some options buying strategy. लेकिन I'll tell you how. छोटा कैपिटल का मतलब ये नहीं ट्रेड नहीं बन सकता है. छोटे कैपिटल का मतलब आप स्टॉक्स पे जाइए, स्टॉक्स पे अप्लाई करिए, देखिए इस कॉन्सेप्ट को और उसके अकॉर्डिंगली पोजीशंस लीजिए. धीरे धीरे जब आपकी एक्यूरेसी बेटर हो रही है, जब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, एंड कन्विक्शन बहुत जरूरी है ट्रेड लेने के लिए. Once that conviction and confidence start building, you will automatically start increasing your capital, और confidence के साथ में वो capital भी बढ़ता जाएगा, and then you can take a little more risk. So you can trade basis of this, but I will not recommend you to trade leverage products या derivatives with 50,000 क्योंकि कम हो जाता है amount. But definitely आप cash stocks में apply कर सकते हो. In fact, मैं Saturday को ही बता रहा था, one of the mentees he applied amazing on small cap stocks, and he Suresh Karunanithy, if please pardon me अगर नाम मिस हो गया, wrong बोल दिया तो, and he made around 60-70% on cash stocks by applying the concept of time. Amazing ना. तो मतलब लोगों को लगता है यार खाली leverage करके ही पैसा बनता है, ऐसा नहीं है. सही चीज अगर आपने अप्लाई की, सही टाइम पे स्टॉक पिकअप किया तो बनता है. So these are the concept I use for identifying stocks for my Khiladi number 1 show on CNBC Awaaz, आपने देखा होगा तो. And I have won consecutive 3 times, even last time, right? Consecutive 3 times I have won, and consecutive बहुत बार जीता भी हूं मैं, more than 20 times, and these are the concepts which help me do that. Okay, does it is it clear? Okay. Nifty, Bank Nifty daily time cycle, I shall share it on the mentorship group for you. Don't worry on that. How much time, hours or day does it take to calculate a fresh stock time cycle? Baba ji, आपका नाम अच्छा है. तो fresh stock पे time cycle first time identify करने के लिए कितना समय चाहिए? It's depends on how quickly you are able to grasp the concept. One. Secondly, अगर आपने टाइम सही से आइडेंटिफाई नहीं किया है तो भी मैं आपको एक इंडिकेटर दूंगा, वो इंडिकेटर को आप यूज करके ट्रेड फिर भी कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको टाइम अप्लाई करना है तो आपको मे बी अप्रोक्सीमेटली, डिपेंड करता है, मतलब मुझे तो 15 मिनट्स 20 मिनट्स में मैं आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज द रिदम ऑफ द मार्केट. समवन कैन टेक 30 मिनट्स, बट you can do that. I mean, it's not a lot of time that you will require to identify a time cycle. Maybe 20-25 minutes you can search for a cycle across time frame. I'm talking 15 minutes daily, it depends, 5 minutes पे, so you can do that. So you don't need a lot of time. Don't worry about it, क्योंकि एक बार कर दिया ना तो वो स्टॉक का काम हो गया है. फिर हमें खाली उसे रिफर करना है, कैलेंडर में ब्लॉक करना है और रिफर करना है, जैसे आईटीसी के बारे में बताते रहता हूँ आप लोगों को. Okay, you have brought the concept of time cycle in India. Thank you very much. Thanks JJ for your comment. And IEX पे व्यू यार बहुत बड़ा क्रैश आया था, फिर पुल बैक है, मतलब आई एम अवॉइडिंग राइट नाउ. I don't want such stock which is
moving because of government intervention. We don't really want to get there, to be very honest. What are the main indicators for new person? दो इंडिकेटर है मेन. अगर आप नए ट्रेडर हो, दो चीज पे खाली ध्यान देना है आपको. प्लीज डू दैट. व्हाट आर दोस टू थिंग्स? दो ही चीज, भाव और समय, प्राइस एंड टाइम. These are the two indicators that you should always focus on. Does it answer your question? Okay, fantastic. I'm stopping the screen share. So दोस्तों, बहुत मजा आया आज आप लोगों के साथ में थोड़ा सा बातचीत करके. I have just presented what I see on the chart. 85 weeks time cycle. Sunil will discuss that sometime else. Can Anshuman, sorry, I'm not getting your question. No problem, Anshuman. Just drop your number. My colleague will call you. Let me see what is your query. Let me do that. What is your expectation of Nifty tomorrow? Nifty tomorrow, I am expecting एक dip चाहिए. Dip आके अगर ऊपर गया तो सही होगा. So view is bullish. I am going to be looking for buying opportunity tomorrow. My expectation is 18,780, 790 तक markets might go on the upside, but momentum कम है. So I'm selling option to take that trade. Buy करके momentum नहीं बन पा रहा है. So morning में देखूंगा मैं 15 minutes, half an hour, what is the trend, and then for the target of 18,780, 790, ज्यादा target नहीं रखा है मैंने. वहां तक लिए 18,838 is the Gann level. That लेकिन 18,838 का मतलब ये नहीं वही पॉइंट पे जाएगा, उसके आसपास, उसके थोड़ा पहले भी जा सकता है, उससे थोड़ा ऊपर जा सकता है. Raja Singh is saying, sir, how can I join you for lifetime mentorship? If you are a part of Menti, you are with me for lifetime. Rather, that's a one-liner answer. Okay, Anshuman, sure, we'll see what we can do. Fantastic, guys. And Anshuman, drop your number. Time cycle कैसे apply करें? Sandeep, यही तो हमने discuss किया. We are going to do that. All of those things we will be doing that in the on 24th and 24th of June. It's going to be very interesting. Even if you're not able to sit for 1 hour regularly, Rajendra, I will ensure that you are enjoying the session so much कि यार उठने का मन ही नहीं करेगा. That's what I can commit. So the concept of time when we discuss and the feedback that we have got from the mentees and everyone is it's so interesting कि यार 1 घंटे से ज्यादा बैठने की इच्छा हो ही जाती है. मतलब, so don't worry, we will have breaks in between, so don't worry at all, Rajendra, for that. Okay, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही. Thank you very much. I'm ending the poll, by the way. I'm sure you participated in the poll. I'll not be able to give you anything more right now. We will discuss this. We will have Friday at 4 and we'll discuss more things, but take the opportunity to be a part of this wonderful journey on Master of Cycles, which is valid for today because you all are here. Thanks a lot. Ashish Kyal signing off. And people on YouTube, if you liked it, do subscribe, share it across, and ensure you put in across your comments whether it is helping you to make money, how we can improvise further from making you learn these concepts. Thank you very much. Have a wonderful time. Have a wonderful day. Ashish Kyal signing off.